Today we have got a very interesting question which says find the value of x, and our equation says x to the power 35 plus x to the power 35 plus x to the power 35 is equals to 81 की power में 9. So this is our question and they have asked us to find the value of x. Let's see how we can solve this. The first step is to add this equation. First of all, you need to add this equation. There is nothing in place of x, so we can write 1. Here also we can write 1, and here is also nothing, so we can write 1. So now if we add this equation, we get 3x to the power 35 is equals to 81 to the power 9. I think the first line is quite clear to everyone. Just we are adding the three variables. Now in the third line, let's write this as it is. And if we convert 81 in power of 3, now since we have 3 over here, we need to convert 81 in power of 3. इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए. Since यहाँ पे अपने पास 3 है, तो यहाँ इस 81 को अपने को 3 में चेंज करना है. So if we do LCM of 81, we get 27, 9, 3 and 3. So what we are getting? We are getting 3 to the power 4. So in place of 81, can we write 3 to the power 4? And put 9 as it is. Just we are doing 81 LCM, and since we need to make it in power of 3, that is the reason we are doing the LCM with 3. Now let's come to the next line. Now 3x to the power 35 is equals to, we can write 3 and 4 9s are 36. 4 into 9 is 36. Now comes the most important step of this sum. Now if you look at this equation, 3x means 3 and x आपस में क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है. तो अगर इस 3 को हम लोग उस साइड लेके चले तो वो क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा. So x to the power 35 is equals to 3 to the power 30x by 3. ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था. अगर इस 3 को हम लोग वहां लेके जाएंगे तो it will become divide. Now there is nothing, that means इसके पावर में क्या है? 1 है. अब एक्सपोनेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब भी हमारा बेसिस सेम है, हम लोग पावर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे. सो कैन वी राइट 3 टू द पावर 36 माइनस 1. 36 का पावर यहाँ पे आ गया और ये 1 ऊपर जाके माइनस होगा क्योंकि ये डिवाइड कर रहा था. यहीं पे अगर ये मल्टीप्लाई होता तो हम लोग पावर को क्या करते? प्लस करते. सो नाउ सी x टू द पावर 35 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 35. आपका सवाल बन गया है x की पावर में 35 is equals to 3 की पावर में 35. Now you can see both the 35 will get cancelled out. So the value of x जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, the value of x is 3 and this is our final answer. Done.